കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആലുവയിൽ ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഇഷ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാബരി മസ്ജിദിന് വേണ്ടി দেখো ভাইরা দেখুন তিনটে লোক কেরালা থেকে এসেছে আমাদের মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ দেখতে। তো তিনারা কিন্তু ভাষাও জানে না, আমাদের হিন্দি ভাষাও জানে না, বাংলা ভাষাও জানে না, কিন্তু তাও কিসের জন্য এসেছে? সে আল্লাহর ঘর দেখার জন্যে। সে তো আর ভাষা টাষা জানে না, ভাষা চিনেও না, লোককে জানেও না, কাকে জানে? শুধু আল্লাহকে। তাই আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করে সে আমাদের বেলডাঙ্গায় গেছে বাবরি মসজিদ দেখার জন্য। ভিডিওটা শেয়ার করে পাশে থাকুন। দাদা বাড়ি কোথায়? বাড়ি কেরালায়, পাড়া। കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആലുവയിൽ ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഇഷ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാബരി മസ്ജിദിന് വേണ്ടി। দেখো বন্ধুরা কেরালা থেকে এসে ইট দিলে খুবই অসাধারণ, খুবই ভালো। বন্ধুরা ভিডিওটা একটু সাপোর্ট করবেন। तीन आदमी केरला से है, केरला से आए हो तुम? ये भी है, कुछ बोलो। कहाँ से आए हो भैया, बताओ एक बार। केरला വിളിച്ചിട്ട് വന്നാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാബരി മസ്ജിദിന്। हिंदी नहीं आता। തമിഴ്, മലയാളം മലയാളം റക്കീം പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് പണിയാൻ വേണ്ടി। ഇതെന്റെ ദോസ്ത് റക്കീം। তো তিনটি ভাইকে তো দেখতেই পাচ্ছেন, সে কেরালা থেকে এসে আমাদের এখানে ইট কিনেছে, কিনে আবার করছে কি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে মসজিদে, সে বাবরি মসজিদে। তাহলে কত দেশ দূরান্ত থেকে সব লোক আসছে আর দেখছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং কি আল্লাহ ছাড়া দুনিয়া তার কেউ নাই, এটা সবাই জানে। তাই অনেক দূর থেকে এবং কি আসছে ইট বা টাকা বা সিমেন্ট পাথর বালু দান করতে।